लोगों ने पिछले टर्न पर मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था। एक बार आप चाहें तो रिवाइज कर लें। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब कि हम कंप्यूटिंग जो है वो किसी ऐसी डिवाइस से करें दैट इज पोर्टेबल, देन वी विल कॉल इट मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, मोबाइल computing allows transmission of data, voice and video over computer or any other wireless enabled device without being connected to a physical link। हम किसी फिजिकल लिंक से, फिजिकल डिवाइस से कनेक्टेड नहीं, फिजिकल लिंक के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारी जो है मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाएगी। दीज आर मेन कॉन्सेप्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ गया? मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल कम्युनिकेशन में it is providing a framework that is responsible for working of mobile computing technology. In this case, communication refers to the infrastructure that ensures seamless and reliable communication among wireless devices। तो भी हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस है, उनके बीच में हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं that is reliable and seamless। The mobile communication framework consists of communication devices। और जो आपका फ्रेमवर्क जिसको हम कह रहे हैं, मोबाइल फ्रेमवर्क, कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है जो हमारा, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। इसमें आपकी क्या क्या आ जाएंगी? फ्रेमवर्क में डिवाइसेस आ जाएंगी, प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, सर्विसेज, बैंडविड्थ एंड पोर्टल्स नेसेसरी टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट स्टेटस सर्विसेज। व्हाटएवर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, उनके लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क हो गया। These devices are responsible for delivering a smooth communication process। This is a type of mobile communication that can take place. It can be fixed or wired, fixed and wireless, mobile and wired, and mobile and wireless। फिक्स्ड एंड वायर्ड में जो है इस कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिवाइस है वो फिक्स्ड है, और कनेक्शन जो है दैट इज थ्रू अ फिजिकल लिंक। This, for example, you can consider the desktop here। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। फिक्स्ड एंड वायरलेस में यू कैन कंसीडर communication towers, because these devices are fixed at their position and providing wireless transmission of data। You would have seen that towers are like this, standing somewhere। इसके ऊपर जो है वो कुछ बड़े से ये की डिवाइस लगी हुई है। एक यहाँ टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा टावर आपका कुछ डिस्टेंस पर लगा हुआ है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिविटी, यहाँ तक कनेक्टिविटी आ रही है, वायरलेस मोड में कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से यहाँ आ गई। सो इट इज प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी अराउंड द एरिया इन विच द टावर इज सिचुएटेड। सो जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। दिस कम्युनिकेशन टावर्स आर फिक्स्ड एंड वायरलेस। इसमें आपके जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन वायरलेस है, एंड द पोजीशन ऑफ द डिवाइस इज फिक्स्ड। तो ये जो आपकी डिवाइस है या जो कम्युनिकेशन टावर है ये आपका फिक्स्ड है। मोबाइल एंड वायर्ड, मोबाइल एंड वायर्ड में यू कैन कंसीडर लैपटॉप। लैपटॉप इज मोबाइल, ठीक है। आप लैपटॉप को लेके जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, आपके पास इस तरह का सिस्टम है। दिस इज योर
लैपटॉप, आप कह सकते हैं ये आपका जो है वो लैपटॉप है, and there's a port through which it is connected to the internet. So in this case, the device is portable, but the connection is wired. So this is a third category in which you are having a portable device with wired connection. So you can consider the laptop here. मोबाइल एंड वायरलेस, मोबाइल डिवाइस भी है और वायरलेस भी है। इसमें वाईफाई डोंगल हो सकता है, ठीक है। ये आपका वायरलेस डिवाइस है। यू वुड हैव सीन सम काइंड ऑफ डोंगल, वाईफाई डोंगल। अभी आजकल आप देखेंगे तो इस तरह के आ रहे हैं कि आपके पास जियो का कोई जो है वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप पूरे घर में कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, बटन लगा हुआ है, यहाँ पर जो है सिग्नल्स शो हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी शो हो रही है और डिफरेंट टाइप की जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है। बट दिस इज इट सेल्फ अ वायरलेस डिवाइस and it is providing wireless connectivity. Okay, so this is example of wireless mobile device. This is portable device. Okay, the Wi-Fi dongle is portable device in itself, and this is providing wireless communication. So this is example of mobile and wireless. You can consider the mobile phones also. जो आपके पास स्मार्टफोन्स है, आप उनको भी यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यू आर हैविंग ए स्मार्टफोन, इट इज़ कनेक्टेड टू सम नेटवर्क। आप देखेंगे इस तरह से उसमें नेटवर्क के सिग्नल भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैटरी शो हो रही है, वाईफाई कनेक्टिविटी आ रही है, यहाँ पर शो कर रहा है दिस इज 4G connectivity. So all this information is shown on the mobile device. Okay. So in this case also, the device itself is mobile. That's why this is having the name mobile. Mobile phone इसी वजह से कहते हैं इसको कि हमारे पास जो phone है वो मोबाइल है, पोर्टेबल नेचर का है। So that's why this phone is called mobile phone. Okay. So in this case, the phone is wireless and connectivity is in wireless. यहाँ पर आपके पास दोनों चीज़ें वायरलेस, जैसे आप वाईफाई डोंगल को एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, वैसे ही आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन जो है वो भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आपका मोबाइल हार्डवेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल हार्डवेयर इज अवेलेबल, different kind of mobile devices which can be connected. So in this case, um, for example, you can consider smartphones, you can consider laptops, you can consider portable PCs, tablet PCs, PDAs. PDAs जो हैं they are they were like इस तरह का इनका सेटअप होता था पीडीए का कि आपके पास एक छोटी स्क्रीन है। नोकिया कम्युनिकेटर के नाम से आया करता था नोकिया का, एंड वाज हैविंग अ कीबोर्ड। छोटा सा कीबोर्ड था उसमें, सारी की तो डेफिनेटली नहीं होंगी। It was having a stylus fitted somewhere here. उसमें एक स्टाइलस रहता था, स्टाइलस की हेल्प से आप जो है स्क्रीन पर लिख सकते हैं। छोटा सा कीबोर्ड है, छोटी सी इसकी स्क्रीन है, बट दिस वाज क्वाइट पावरफुल मिनी कंप्यूटर। आपको एक छोटा सा कंप्यूटर था एंड इट वाज वेरी यूजफुल इन दोज डेज। बट नाउ यू विल नॉट सी द पीडीएस बिकॉज पीडीएस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्मार्टफोन्स। अब आपके पास स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, टैबलेट फोन्स आ रहे हैं, they are quite capable and they can do anything.
जिस वक्त पीडीएस आते तो उस वक्त द फोन्स वर नॉट स्मार्ट. The phone was just for calling purpose, and PDAs were offering all these services, whatever being provided nowadays in mobiles. So this was the scenario. So PDAs were quite popular in elite class or business class people. These devices are having inbuilt receiver, okay, through which they can receive the communication, and एंड वन ट्रांसमीटर. एक आपके पास रिसीवर, एक ट्रांसमीटर है, दोनों चीज़ें इसमें लगी हुई हैं. एंड दिस इज प्रोवाइडिंग फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था. फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स जो है वो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है कि इफ देर आर टू पर्सन्स, you would have seen in some kind of movies that or army personnel are using these devices, and these are called walkie-talkie. Okay. One person is calling and it's communicating from his end. And once the communication is over, then the person will say over. Then the person on the other end will start the conversation, and whatever he want to say, he will say, he or she. And once the communication over, this person will also say over. Then this person will know that his sentence is complete, and uh, now he may start talking. Okay. So this is how this is called half duplex. Yeah, half डुप्लेक्स सिस्टम कहलाता है. फुल डुप्लेक्स में आप सेंड पर हैं, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, आप जो है बोल रहे हैं और सामने वाला भी बोल रहा है. बोथ आर टॉकिंग एंड एट द सेम टाइम बोथ आर लिसनिंग ऑल्सो. दोनों जो है उसको सुन भी रहे हैं. सो दिस इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. इफ parties from both end can talk, ठीक है, तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाएगा. और अगर सिर्फ दोनों में से एक ही बोल सकता है एक बार में, एक बोलेगा, देन दिस इज कॉल्ड half duplex communication. So communication can be half duplex or full duplex. Then we considered some mobile softwares. Mobile software में हमारे पास क्या थे? We are having different kind of mobile, different mobile of different companies, and these companies were providing different softwares to run their hardware. Whatever mobile hardware is there, each company is providing some kind of software, and these softwares are known as mobile operating systems. And in 2007, Apple launched its iPhone. So this is iPhone, but this iPhone became very popular around the globe. And nowadays, um, there are peoples from business class or from elite class who are using iPhones, because the cost of iPhone when these are launched is around 60,000 or 70,000 or more than that. Similarly, Android phones then came around the same year, 2007 or 2008. But these phones were quite cheap as compared to iPhones, because the software was from Google, and it made available to all companies. छोटी बड़ी सभी कंपनियों को गूगल ने जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया. सो ईच कंपनी यूज्ड इट्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्ट making phones based on Android. And these phones were quite in the reach of ordinary people. So Android became de facto standard for you can say smartphones. Whenever we are talking about Android phones or smartphones, we are most of the time considering smartphones based on Android. And since Android market is very big, so mm, generally you can find application based on anything. Whatever you want, you can find the application.
can find the application for that particular purpose. But in case of iOS platform, since these are used in business class only, so if you want to download something, it's generally not available, and if it is available, then it is paid also. And many things are considered in case of iOS. For example, if you want to record a call when you are calling or when you are receiving a call, then you will not be able to find any software support for recording the call of a person in uh, iOS or iPhones. But in case of Android phones, you can find different applications for this purpose. You can find applications for recording purpose. There were smartphone from Windows also. These phones were based on Windows 7, and Windows 8 was also available for mobile phones and PCs. And then Windows 10. अभी आपका विंडोज 10 जो है वो मोबाइल पीसीज पर भी अवेलेबल है और मोबाइल में भी अवेलेबल। कुछ मोबाइल जो विंडो बेस्ड मोबाइल्स रहते हैं उनमें आपको जो फ़ोन मिलेगा वो विंडो बेस्ड मिल जाएगा। एंड देयर वाज अ वेरी फेमस एलीट क्लास और बिजनेस क्लास फ़ोन दैट वाज ब्लैकबेरी। ये भी आपका बहुत पॉपुलर फ़ोन हुआ और बहुत ही अच्छा फ़ोन और बहुत ही सिक्योर फ़ोन माना जाता था। बट because of their miscalculation of the market, and they were defeated by Android. Android was available for all devices, all people in all range. Android में भी आप जो महंगे फ़ोन्स भी खरीद सकते हैं और सस्ते फ़ोन्स भी खरीद सकते हैं। तो ब्लैकबेरी ने भी जो है वो कुछ कोशिश ये करी कि इन्होंने अपनी प्राइसेस कम की और कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो कम करी, और इस तरह से दे ट्राइड टू गेट सम मार्केट, बट इट वाज ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय एंड्रॉयड एंड दे फेल्ड। सो ब्लैकबेरी, you can say, is non-existent today nowadays. So this is about mobile softwares. These are applications of mobile computing where we can use mobile communication to access internet or web, to provide our position. We can use mobile device for emergency services, for entertainment services, and for educational services. We can use mobile devices or mobile computing devices. As I told you that PDS became very popular in around 2000 when these Android-based phones were not available, and so the managers of the companies, they needed to access their emails, their interface of the software that are proprietary software of any company, and they are available only within the premises of the company. But sometimes it was necessary for one person to access network of the company from outside the company premises or company network. So how to gain access of the company's network from some location outside the company? So for that purpose, companies provided mobile client softwares which can access uh, the company's network, and that software is providing a limited kind of accessibility to the mobile network. So these softwares were known as mobile client softwares or wireless client softwares. In this, you can say जो most popular phones were PDS. ठीक है, आपके पास जो है PDS थे, डेटा कैपेबल सेलुलर फोन्स उस वक्त नए नए आने शुरू हुए थे। बट इफ द फोन्स वर डेटा कैपेबल, इट मीन्स दे कैन कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट। तो those phones were able to access the emails or notebooks or tablet PCs and Research in Motion. This is BlackBerry's email device. Research in Motion. Its name was Research in Motion RIM.
ये आपका जो है रिम के नाम से मशहूर था। Wireless email devices has led to a similar growth in the availability of software to support them within the enterprise network infrastructure. In enterprise network infrastructure जो है, it means जो कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क है और प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, उन तक पहुंच अवेलेबल कराने के लिए मोबाइल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेशली डेवलप किए गए। Okay. So these mobile client software provided connectivity outside the company और कंपनी प्रेमिसेस कि आप कंपनी के बाहर हैं, आप जो है वो कोई पर्सन जो है, जो मैनेजर है, हाई पोस्ट पे बैठने वाला पर्सन है, वो सपोज ही इज अटेंडिंग सम काइंड ऑफ मीटिंग फ्रॉम द कंपनी, एंड if he is getting some important email on company's email, a company's mail server, then he can read the mail only if he is allowed to access the mail server. So for that purpose, if he is having a mobile client software, then it's very easy for him to access the um, email. Okay, and if he is able to access email in a meeting or somewhere outside the campus of the company, then it's quite productive. So for this purpose, the mobile client softwares were developed. Okay, now come to the next part. This is our wireless application protocol, WAP. Okay, and this protocol is known as WAP. WAP is wireless application protocol. Okay, wireless application protocol क्या है? It's a model or an application environment, and a set of communication protocols। आप लोगों ने मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका दिस इज प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस डिवाइसेस। ठीक है, ये आपका वायरलेस डिवाइसेस के लिए एक प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट था उसी पर बेस्ड है। ठीक है, एंड इट्स हायरार्किकल डिजाइन इज वेरी मच सिमिलर टू टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। You must have heard TCP/IP protocol suite. Have you heard about TCP/IP? This is called Transmission Control Protocol, and this is called Internet Protocol. TCP/IP जो है वो एक मॉडल है, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। सो हाउ द कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस, फॉर दैट पर्पस देयर इज अ protocol. Protocol is means a set of rules which are to be followed when communicating with other devices. If you are having no standard way of communication, then it will be quite difficult. Okay, so the मोबाइल कंपनीज और जो कम्युनिकेशन फील्ड में कंपनीज थी, उन लोगों ने अपना जो एक कंसोर्टियम बनाया और उसमें ये डिसाइड हुआ कि दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर प्रोटोकॉल विच कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो इस पर्पज से आपका टीसीपी आईपी जो है वो डेवलप हुआ। टीसीपी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इन itself is nothing but set of rules। जब प्रोटोकॉल की आप अगर बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल वर्ड इन itself means set of rules, set of rules। Must have heard about protocol when the PM is visiting other countries, or the president or prime minister of other countries are visiting India. Then there's a protocol। आपने इसका नाम सुना हो कि प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने इससे मुलाकात करी, इससे जो है वो मिले। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो इसमें होता है फॉरेन अफेयर्स में,
वही प्रोटोकॉल होता है कि दैट इक्विवेलेंट ऑफिसर्स और इक्विवेलेंट पोस्ट होल्डर्स विल मीट विद ईच अदर. So if a prime minister is coming from any other country, then he will meet the prime minister. If foreign minister is coming, then he will talk to foreign minister of the country. If defense minister is coming, then he will talk to the defense minister only. Defense minister will not talk to foreign minister. Okay, so defense will talk to defense. Okay, foreign minister वो आपका दूसरे कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से जो है वो कम्युनिकेट करेगा. सो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो कॉमर्स मिनिस्टर से बात करेगा, कॉमर्स, या उसका जो इक्विवेलेंट आया होगा उससे बात होगी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल बिकॉज it eases the task of communication between functionaries of the two different countries. Otherwise, this will become very difficult if foreign minister is talking to defense minister, to commerce and industry minister, to health minister. Then it will be very difficult to follow the things. So there are different departments and having different heads of the departments, and each head of the department is meeting its equivalent. So defense head is meeting to defense head, foreign minister is meeting with foreign minister, commerce minister is meeting with commerce minister. So so that the work can be done smoothly. For this purpose, we are having a set of rules, and this set of rule is known as protocol. ठीक है. तो ये हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है. Okay, so we are having a protocol suite. This protocol suite is for communication of डेटा बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस. अब आपके पास दो डिवाइसेस हैं, एक कंप्यूटर आपके पास जो है वो एक एंड पर है. ये आप करें कि ये आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, और दूसरे एंड पे भी जो है वो आपके पास एक कंप्यूटर और लैपटॉप है, एंड यू आर कम्युनिकेटिंग. ठीक है. वायरलेस कम्युनिकेशन हो या वायर्ड कम्युनिकेशन हो, बट यू हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस. सो वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए हम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन कह रहे हैं. लैपटॉप है या हमारे पास जो है वो systems हैं. This system is connected to some router in your office, and then this is connected through some wireless device, wireless network के through. ऐसे आपके पास ये सिस्टम जो है वो किसी उससे डिवाइस से कनेक्ट है, and this device is communicating. So the two systems are communicating with each other with the help of some wireless network, and this wireless network is you can say this is our Wi-Fi network. But for computer systems, it was earlier for wired systems. It was computer systems. In this case, we were providing RJ45 as connector. Okay. So there was a communication suite, communication protocol suite that is known as TCP/IP. It's having seven different layers: application layer, session layer, physical layer, communication layer. So different layers are there, and each layer is providing some kind of functionality. But this was for computers and laptops. But for mobile devices, the screen was very small. Still, it is small. The screen is small. The power of mobile devices is small. The connectivity of mobile devices also is small, you can say, as compared to computer systems. Or you can consider 20 years back it was quite a small range that can be available for mobile devices, for example smartphones or PDAs. So the need was felt that there must be a separate protocol suite that is similar to TCP/IP, and
it should be available for small devices, so that web or the internet can be accessed on these small screen devices also, um, considering their small memory, their small size of a screen, and other parameters, so that the internet can be accessed in proper way. Okay, because if we are using a web page which is consisting of a whole screen on mobile, on your computer, or the laptop, and if you are trying to display same data in same format on the mobile device, then you will not be able to read that data. It will be too small for the users to read the data, so it's not the correct approach. So for this purpose, the need was felt that to render the web pages on mobile devices, a separate protocol should be there. So WAP is a de facto standard, ठीक है, for a protocol designed for माइक्रो ब्राउजर्स यानी कि जो आपकी स्मॉल डिवाइसेस में या मोबाइल डिवाइसेस में आ रहे हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं माइक्रो ब्राउजर्स. ठीक है, वी आर कॉलिंग देम एज माइक्रो ब्राउजर्स. आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, 5 मिनट रह गए. And it enables the mobile devices to interact. Okay, now mobile devices can interact, exchange, and transmit the information over the internet. So to enable these small devices to access internet, web was, um, and you can say, developed. Was developed as a and then it came into use as a de facto standard, means everybody was using the web protocol for accessing internet on small devices. The web is based on the concept of world wide web. Yeah, वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है. एंड द बैकएंड फंक्शनिंग आल्सो रिमेन्स सिमिलर टू डब्ल्यू डब्ल्यू, क्योंकि ये आपकी फंक्शनिंग जो है वो भी इसी की सिमिलर, बट इट यूजिंग यूजेज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, WML. इस चीज़ को आप जो है वो याद कर लें कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. इसमें लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTML. आप बड़ी डिवाइसेस देख रहे हैं, यू आर सेइंग दैट दिस इज HTML. Instead of using HTML, it was WML, wireless markup language, which is providing web services. Okay, WML to access the web services, while WW uses वर्ल्ड वाइड वेब है, वो HTML को यूज करता है एज मार्कअप लैंग्वेज. सो this is different in wireless application protocol. That wireless application protocol is using wireless markup language. Instead of HTML, it is using WML. In 1998, some giant IT companies such as Ericsson के नाम आपने शायद सुना होगा, ये फोन बनाती थी पहले. मोटरोला, ये भी पुरानी कंपनी है. मोटरोला तो बहुत पुरानी कंपनी है. In earlier days, it was making CPUs. Motorola के भी CPU आया करते थे, but then Intel leave them all behind. Ericsson के मोबाइल फोन्स आते थे, मोटरोला के जो है वो मोबाइल फोन्स और पेजर और जो है वो क्या बताया था मैंने आपको, CPUs, नोकिया की मोबाइल फोन्स, and Unwired Planet. This was another company. Its name is Unwired Planet. Okay. They founded the Web Forum. 1998 में इन्होंने एक जो है वो forum बनाई, and that was called Web Forum. It was made in 1998 to standardize the various wireless technology via protocols. तो क्या कि अगर अलग अलग कंपनीज जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करें, दे कैन यूज, और मे बी द protocol suite of one company is better than other company, but if they need to communicate with each other, then it will be very difficult because they are using different protocols or they are not having same protocol. So this will make their task difficult. So for that purpose, all these companies, giant companies, they came together and
make a forum that is known as Web Forum in 1998. After developing the web model, it was accepted as a wireless protocol globally. ठीक है, वायरलेस वेब प्रोटोकॉल को जो है वो परमिशन मिल गई, देन इट वाज यूज्ड एज वायरलेस प्रोटोकॉल. ठीक है, ये आपका वायरलेस प्रोटोकॉल बन गया एंड इट वाज यूज्ड ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में जो है इसको यूज किया गया. कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन मल्टीपल वायरलेस टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल्स, प्रिंटर्स, पेजर्स. इन्हीं सब डिवाइसेस पर, जो भी मोबाइल डिवाइसेस थे, उनमें इसका जो है वो यूज आने लगा. बस आज के लिए इतना. तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी. इट्स अबाउट 8:50. विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट वन. ये आपको वैसे देखें तो ये मोबाइल फोन है. दिस इज योर टावर. इसको मैं बताता हूँ. मोबाइल टावर, दिस इज कम्युनिकेटिंग थ्रू मोबाइल टावर. सो योर फोन इज कम्युनिकेटिंग विद मोबाइल टावर. मोबाइल टावर इज communicating with telephone exchange. Then telephone exchanges through some web gateway is providing internet connectivity to the mobile devices. Okay. So we'll discuss it on the next one. So it's end of our today's class. You can सर बोलिए. सर आपने ये नोट्स अपलोड कर दिए हैं गूगल क्लासरूम पर? अभी अभी नहीं किए हैं. मैं कर दूंगा मैंने. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. ओके. अटेंडेंस मार्क कर दी सभी ने. यस सर. Okay, then you can disconnect.